Gurur Brahma, Gurur Vishnu. Lesson on the 9th number chapter, that is the quenching of the mind, that is calm mind. मन कैसा शांत करना हर परिस्थिति में, वो यहाँ पे वशिष्ठ ऋषि राम जी को सिखा रहे हैं और राम जी के थ्रू, राम जी के मीडियम थ्रू अपने को भी उसका बोध हो रहा है. तो टॉपिक का नाम है चित्त प्रशमनम. चित्त अपना जो है प्रशमनम यानी क्वेंचिंग, यानी उसको शांत करना है. वो चित्त अपना भड़क जाता है. काल्मिंग, कोई चीज अगर भड़क गई तो अपन क्या करते हैं, उसकी पीठ पे हाथ रखते हैं, अरे शांत हो जा, शांत हो जा, गुस्सा मत कर, शांत हो जाए, सब बोलते हैं उसको. तो ये प्रोसेस ही वही अपने मन को, जो मन अपना सुनता नहीं है, द माइंड विच इज नॉट लिसनिंग टू अस, वी हैव टू कीप इट अंडर द कंट्रोल. एंड द कंट्रोल इज मनाचा ब्रेक, उत्तम ब्रेक. इफ यू अप्लाई द break of mind, mind's break is a best break. That's what has been written on the back side of the trucks which are plying on the highways. So why it is written like that? Because you have to control your mind. If your mind is controlled, your vehicle will be controlled. वैसे जीवन की भी ये व्हीकल कंट्रोल तभी रहेगी जब मन शांत रहेगा. तो पहला टॉपिक बताया था चित्त से द्वेष बीजे. दिस माइंड, two seeds of the mind. There are two. Mind has two seeds, namely moment of prana, that is a vital air. Vital air जो अपनी है, that is but natural, biological, bioenergy बोला जाता है उसको. So it is not like only breathing. Prana is not, cannot be equated only to the breathing. It is a psychological, physiological functions. Like you wake up in the morning and your body and mind gets enlivened, तो उसको प्राण शक्ति कहा जाता है. So how this prana shakti expresses? This prana shakti expresses as desire. अपना एक ही काम है, माइंड को प्योर कॉन्शियसनेस में डिसॉल्व करना. जहां से आया भैया वहीं जा. So that mind has to go there. So how to take that mind irrespective of the situations around us? अपने आजू बाजू की जो सिचुएशन है, अपना माइंड वहां पे कैसे ले जाना है. इसमें दो चीजें बताइए. वन इज वाइटल एनर्जी, दैट इज बायो एनर्जी. दैट इज ऑब्वियस बिकॉज इट्स अ बायोलॉजिकल चैनल्स. बायो एनर्जी चैनल्स आर देयर, व्हिच नाड़ी कहते हैं. एंड सेकंड इज फॉर्म इमेजिनेशन. अपन ऐसे सोचते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रॉन्ग notions. We have wrong notions about four things: wrong notion about ourselves, wrong notion about world, wrong notion about spiritual practice, and wrong notion about the God. So what is this wrong notion about individual? And my who, my, I am the individual. That me has to be dropped. So what is this me? It is undivided, unfragmented consciousness. It is not divided, it is only seems to be divided. So what is the example given in the scriptures? Scriptures gives a very good example. Like they say you see the moon in the sky and you say Prathama, Dvitiya, Tritiya, likewise Purnima and Amavasya. So 16 color. But actually that itself is an illusion because पृथ्वी घूम रही है, चंद्र घूम नहीं रहा. चंद्र तो वैसे का वैसा सर्कल है. But because Earth moves, we see the kala, Prathama, Dvitiya, Tritiya. Likewise, in the world also, this all people which we are seeing are only manifestation of that same divinity without fragmentation. उसमें कोई fragment हुआ ही नहीं है, उसमें कोई ये नहीं हो. But because what has happened is चित्त प्रशमन, प्राण वाइटल एनर्जी इंडिविजुअल की हो गई उसके वजह से, और फॉर्म इमेजिनेशन कि मैं अलग हूँ वो अलग है. सो व्हाट हैज टू बी डन नाउ इज sense of duality and sense of incompleteness has to be dropped. अपन अलग है और दूसरा अलग है, ये ड्रॉप करना पड़ेगा बिकॉज सब ईश्वरी है. एंड इनकम्प्लीट, अपन इनकम्प्लीट इसलिए मुझे कुछ चाहिए. दैट इफ यू ड्रॉप बोथ द थिंग्स, व्हाट विल हैपन इज यू विल अंडरस्टैंड दैट इंडिविजुअलिटी इज नॉट देयर. ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द वर्ल्ड विल बी ड्रॉप्ड. आपको पता चल गया सब्जेक्टिविटी, अरे नारायण के खेल चल रहा है. सेकंड वर्ल्ड,
वर्ल्ड को भी अलग 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 फ्रेगमेंटेड देखते हैं, आदमी औरत पे, ट्री, animals, lions, elephant. Okay, these are all required. This is very good in the world for all relative Jagat. It is a must. But don't take it seriously. It's a divine play. Take you either as an illusion, take everything as an illusion, or take everything as a divine. Take only one of them, not both at a time. या तो ये सभी मिथ्या है तो एंजॉय करो, या ये सभी भगवान है तो भी एंजॉय करो. तो बेसिकली दोनों सिचुएशन में खुश रहना सीखना है, अपने मन को खुश रखना है. सो जगत का अपना इंडिविजुअल देख लिए, जगत का देख लिए. गॉड, गॉड इज व्हाट, गॉड जो आते हैं, भगवान रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण लेंगे तो भगवान रामकृष्ण परमहंस खुद ही डिविनिटी होते हुए भी अपने लिए, जो मानव का उद्धार करने के लिए, फॉर द पीपल्स वेलफेयर, he has come in the form called as Ramakrishna. So it will be very easy for us to pray him. We cannot pray Nirgun Nirvikar, so we have to have Sagun Saka. So the same Nirgun Nirvikar has come as Bhagwan Ramakrishna Paramahans in this world. So that's it. So that is the God. And what is the spiritual practice? The spiritual practice is very simple. Mauj mein raho. Mauj mein raho. Be happy always under all situations. Let the situation come. Don't discriminate the situation. So nothing to lose, nothing to gain in this world. Nothing to worry about this world. And then are you going to become stones? अपने को अपन क्या पत्थर बन जाएंगे? कुछ भी नहीं करना है क्या? बैठे रहना है, तमोगुण लाना है कि नहीं? The person who is Jeevan Mukta and person who is Tamoguni, they look similar but they are not similar. दोनों बाहर से सरीके दिखते हैं, they are not similar. Tamoguni person is not doing anything because he is frustrated. अंदर से frustrated है. And whereas Jeevan Mukta Purush doing everything or not doing anything, but he is always blissful, contented, cheerful, happy, and over and above cool and relaxed. हर वक्त तो खुश रहता है. उसको खुश रहना ही सिखाया गया है. तो वो अपने मजे में रहता है. He has nothing to lose and nothing to gain. So accordingly, he leads his life very nicely, and he is not bothered about the outcome of the actions which he is doing. He does the actions very perfectly because he has no personal agenda of whatever he is doing. He is doing all the activities happily, cheerfully, blissfully, contented, and over and above relaxed and cool mind, because he has decided and knows that either the world is all illusionary like Dhruvajar or world is divine like ईशावास्य उपनिषद से. ईशावास्य उपनिषद ने बताया कि पूरे जगत को ईश्वर से आच्छादित कर दो. सो व्हाट इज दिस, जगत को ईश्वर से आच्छादित कर दो यानी क्या? इट इज like if you compare the three skies which we have studied earlier, one is भूताकाश, जिसमें अपना ये ट्रांजैक्शन चल रहा है, कंप्यूटर में वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, कोई लोग सुन रहे हैं. So this comes under भूताकाश. The duality is maintained. Second is चिंताकाश. चिंताकाश में थिंकिंग, बैठे बैठे थिंकिंग कर रहे हैं, अरे कौन अमेरिका में होगा, वहाँ क्या होगा, वॉर चल रही होंगी क्या. दिस इज चिंताकाश. एंड देयर इज अनदर आकाश which is Chidakash, that is 100% solid consciousness. There is nothing other than the consciousness in that. So, if you are in Chidakash, so everything comes as a divine, divine, divine. So, basically, it is unfragmented, undivided consciousness which is playing its role as if it is divided. वो डिवाइड नहीं होता है, वो एज इफ डिवाइडेड है. और फिर प्ले चल रहा है लाइक इन अ ड्रामा. somebody becomes a man becomes Sita, another man becomes Ram, another man becomes Lakshman, and they play very nice role, but the heart in heart they know that we are the same gully players, like small people in on the roadside who is playing this drama, but this drama is played such a nice way enacted that the audience start crying. How much suffering is there for this Sita Ma? She has to go to the jungle, they have to suffer, but actually these all the people are staying in one house only. पूरे एक ही घर के लोग हैं. But then drama is drama, so people enjoy, and when people see people, अरे यार आज का ड्रामा बहुत मजा आया ड्रामा में. So they know, really we played the role very nicely. So this is a drama of that Brahma ji going on. So let him do the drama. Why we should suffer? अपने को सफर होना नहीं है. ये चित्त सद्विवेजे में अपन पढ़ा. उसके बाद second topic is असंवेदनम. There are different methods told now. Different methods are told. What are the different methods told? Now it is coming to
absence of knowing. See, if we cannot remember maybe what I was told in the first topic, now Vasishtha Rishi is telling from different point of view. So we have seen yesterday two shlokas, that is shloka number 16 and shloka number 17. Little recap we will do it today also. What it said in 14, 16 and 17 is, don't take the world seriously. ये जगत को seriously मत लो भैया. It appears under n number of conditions. इसका appearance जो है वो n number of conditions में आता है. ये अपने मर्जी से नहीं दिखता है. Like you go to the bed in the night, आप सो जाओ. When you go to the bed, obviously you want to sleep. You go into the quilt, आप रजाई के अंदर चले गए और वहां जाके अपना भजन चालू कर देते. I want sleep, I want sleep, I want sleep. Sleep will not come. नींद आएगी नहीं ऐसे. जब तक आए और want आप ड्रॉप नहीं करोगे. You have to drop आए, you have to drop want, automatically sleep will come. आई ड्रॉप कर दिया, वन ड्रॉप कर दिया, स्लिप आ गई, चलो सो गए. सो हु इज स्लीपिंग नाउ? थिंक. देयर आर फोर गेटवेज ऑफ लिबरेशन: कंटेनमेंट, ट्रैंक्विलिटी, होली कंपनी एंड इंक्वायरी, विच इज कॉल्ड एज थिंकिंग. कंटेम्पलेशन करे, सोच. सुबह उठे अपन, तो उठे पर इमीडिएटली एट सेम मोमेंट यू डोंट बिकम एनीबडी. दैट मोमेंट, व्हाट इज दैट? यू आर वेरी मच विद द डिवाइन, बिकॉज योर ऑल थॉट्स आर सस्पेंडेड. इट इज नॉट जीरो लाइक जीवन मुक्त. सस्पेंड रहती थॉट्स. When your thoughts are suspended, your mind is equal to consciousness, so you're happy. You're nobody at that time. But moment you wake up, and what happens is, first things which happens is because of nadi, prana, vital energy, bio energy starts functioning. अरे मुझे बाथरूम जाना है, अरे मुझे ये करना है, अरे मुझे चाय बनाना है, अरे मैं आदमी हूँ. All things starts within a fraction of second सब हो जाता है. उसके बाद मेंटल प्रोजेक्शंस हो जाता है. मेरे को घूमने जाना है, मेरे को मंगल आरती को जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है. At 5 o'clock he starts murmuring with himself, अपने आप से बोलने लग जाता है. So how to do that? The absence of knowing. If you are relaxed at that moment, sit for meditation for 5-10 minutes on your bed only and think that you are nobody. Do a bhavana that you are like sky. You are infinite. If you put your mind on infinity, what will happen is your mind will dissolve into the consciousness. अपना मन automatically consciousness में dissolve हो जाएगा and you will feel a bliss. तुरंत आपको ब्लिस मिल जाएगा. सो कॉन्सेंट्रेटिंग योर माइंड ऑन स्काई विद ओपन आईज, यू कैन सी द स्काई, ऑल थॉट्स विल ड्रॉप. और विद क्लोज आईज, सी द आईज. इफ यू आर सिटिंग इन अ रूम, all thoughts will drop. So it's a very good exercise. We can do that. That's what we have said in yesterday's 2 shloka. So don't take this world seriously. It appears under n number of conditions. Like we see the picture. If you keep a picture very close to your eyes, you cannot see it properly. If you keep picture 1 kilometers away, you cannot see that picture. So keep a picture at a particular distance. देखो particular distance पे रखना है. तो similarly, how to keep this world at a particular distance? देखो, सुनो, बोलो मत. Don't react in this world. No reaction, no commenting, no worry, no frustration. So you will be at peace. कोई comment ही मत करो. जो काम सामने आया, जो काम आया उतना कर दिया. Be happy. नहीं आया काम तो relax. That's what he's saying. Now, Sri Rama is asking another next thing. He has understood this. So now he's asking chapter number 19, topic number 2, shloka number 18, page 196. We continue. Sri Rama uvacha असंवित्ति अजडास्था कीदृशी भवति प्रभो असंवित्तो च जाड्यं तत् कथं वा विनिवर्तते. Revered Lord, of what nature is absence of knowing or experiencing? When there is absence of knowing or experiencing, how possibly does that dullness cease? ये absence of knowing में dullness cease कैसा हो जाता है? Now Vasishtha ऋषि says, वशिष्ठ उवाच या सर्वत्र नावस्थास्तो विश्रांतास्तो न कुत्रचित् जीवो न विन्दते किंचित् असंवित अजडो हि स जीवन मुक्त सविधेय कुर्वन् कार्य शतान्यपि. He who, now the meaning of this in English, he who has not, he who has no settled support, that means or means of abiding everywhere, nor has repose stay anywhere, that liberated soul does not recognize or experience anything of the known. यानी meaning क्या है? The person who is now practicing this sadhana which has been told, like when you wake up in the morning, moment you wake up, you become upadhis. That means you become somebody. Even though you become somebody like husband, father, mother, in-laws, outlaws, what are the upadhis you get? Or a man or woman, what are the upadhis you are getting? You know that this upadhi is useful. You know that this upadhi will be very much needed in the relative world, but he doesn't take it real.
He said, ठीक है ये मिला है तो करना है. He has been given a role of Rama in a drama, so he do the role of Rama in a drama for that day. But then director feels no, you should become Ravana now. So next day he become Ravana. Same person become Ravana because he has no attachment to the post called as Ram, the character called as Rama or Ravana. He is attachment only to the money. उसको वो जो ड्रामा करके पैसे मिलने वाले उसमें उसको आनंद है. वैसे जीवन में अपने को काय के साथ अटैचमेंट होना चाहिए? अपने जीवन में अटैचमेंट होना चाहिए हैप्पीनेस के साथ, अटैचमेंट होना चाहिए पीस के साथ. जो ड्रामा दिया है वो एक्शन एक्टर दिया है तो यू डू दैट एक्शन. So let's say if I am working in an office, I have been given a job of an officer. Do that as an officer a job. But tomorrow you have been made as a director. Okay, do the job as a director and be happy on the both the situation. So till you don't retire or superannuate, you do that job. Otherwise, moment you superannuate, come back to home and be relaxed. So basically, whether you do a job or not do a job, both the situation your mind should remain tranquil, contented, blissful, happy, cool, and relaxed. It has to be under all situation. Peace of mind is very important. That's what it is. Vasishtha is saying. He is not knowing, experiencing, but is not dull, since he is a nature of pure, undivided consciousness. यहाँ पे जो कंफ्यूजन हो जाता है लोगों का, अरे कुछ नहीं कर रहा तो डल हो गया क्या, सो गया क्या, ये तमोगुण में चले गए. नो नो नो, ही इज द नेचर ऑफ प्योर अनडिवाइडेड कॉन्शियसनेस. वो तो खुद ही प्योर अनडिवाइडेड कॉन्शियसनेस हो गया. वो तो प्रभु में विलीन हो गया. जो प्रभु में विलीन हो गया उसको कोई चिंता ही नहीं है. जो कुछ काम कर रहा है वो प्रभु के सानिध्य से कर रहा है. व्हाट इज दैट? he remains a simple and disciplined life. हरी इच्छा, जो कोई उसके मन के अगेंस्ट में हो तो हरी इच्छा, और उसके हरी मन के फॉर हो गया तो हरी कृपा. एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू हिज विश, इट इज हरी कृपा. और अदरवाइज गोज अगेंस्ट हिम, इट्स हरी इच्छा. So whether it is Hari Krupa or Hari Ichcha, is always happy. So liberated one does not seek the known. जो liberated one है, जीवन मुक्त है, he does not seek the known. The knower known knowledge is dropped. Triputi is dropped from his thinking. His mind does not rest in the known. उसका माइंड वो नॉन में रहता नहीं है. कोई चीज दिख गई रास्ते पे, एक्सीडेंट दिख गया, ओके गो एंड हेल्प द पीपल, बट हिज माइंड इज नॉट अटैच्ड टू दैट फॉर गोसिपिंग. सो व्हाट ही डज, देखो सुनो बोलो मत. ही डजंट टॉक, वेयरएज ही हेल्प्स दोस पीपल टू कम आउट ऑफ देयर मिजरी. तो अपना भी काम है, लोगों को मिजरी से बाहर निकलना है, लोगों को फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकालना है, लोगों को हैप्पीनेस में करना है, लोगों को ट्रैंक्विलिटी में लाना है. जो अपने को गेटवेज ऑफ लिबरेशन पढ़ाया था सेकंड चैप्टर में, we have to bring that there. His mind does not rest in the known. He has no pros or support anywhere. वो किसी भी चीज का जगत में सपोर्ट नहीं लेता. It abides in pure awareness, freed from the past and without creating the future. उसका मन कहाँ पे रहता है? Whether you like it or not, whether you know it or not, whether you want it or not, you are divine. वो हर वक्त डिविनिटी में रहता है. उसको पता है जगत है अनफ्रेगमेंटेड, अनडिवाइडेड कॉन्शियसनेस है. मैं भूल भुलैया करके रिलेटिव जगत में अपना मन डाल के unnecessary suffer karta hu. So how is that? This undivided consciousness is infinite. So finite only creates desire. Infinite cannot create desire. So let us devalue the world. जगत को devalue करना है. And do not accept it as real. उसको real करके लो मत. It only appears and disappears. वो आता है जाता. अपना एग्जाम्पल देखो, बर्थ के पहले मैं नहीं था, अभी मैं थोड़े दिन के लिए हूँ, फिर चले जाऊंगा. आता और चले जाता है. So why to worry? So real spiritual practice is not becoming extraordinary. Don't become extraordinary. Real spiritual practice is not taking this world too seriously. ये जगत को seriously लेना नहीं. Take this world lightly in the light of wisdom. ये जगत को wisdom के light में lightly लेना है. And pure consciousness exists, is the cause of subject-object duality. And when we reach the cause, the effect do not affect us. जब अपने को पता चल गया ये ऐसा है, जब when we know the truth, either it is illusion or otherwise it is divine. In the both the case, our mind will always remain tranquil, happy, blissful, cheerful, and cool and relaxed. So as long as I consider myself to be limited to this body, relations, worlds, subject-object duality is the cause of innumerable miseries in life. इससे बहुत miseries अपने life में आती है. So although joy and sorrow are experienced, still joyful and sorrowful personalities are not born. अपने को joy और sorrow अपने जीवन में आते हैं, but joyful और sorrowful situations अपने मन में आते नहीं है. Likewise, we have today completed 3 more shlokas. Let us see the remaining part tomorrow. We have now started that second topic, that is asamvedanam. So there are a lot of shlokas, at least
10 15 shlokas are given by Vasishtha Rishi to Rama only for the purpose that quenching of mind, अपना मन शांत करने के लिए. देखो कितने वशिष्ठ ऋषि मेहनत करते थे राम पे, तभी वो राम के भगवान राम बन पाए. विद दिस प्रेयर्स, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम तत्सत्. Sri Ramachandra Arpanamastu. Submitting the divine fruits to the holy feet of Sri Ramachandra.